Hello friends, good morning. Today is 6th of February 2024. This video will be in English and in this video we are going to talk about हम लोग बात करने वाले हैं करेंसी मार्केट के बारे में. So चलिए डायरेक्टली चलते हैं to the screen sharing. Screen sharing पे I'm first going into trading economics और एक बार ट्विटर में भी चलेंगे. So trading economics may first job as a trader, you have to look through the news. This is important. Australia holds rate means today Reserve Bank of Australia का meeting था and Reserve Bank of Australia has maintained its rate unchanged at 4.35%. तो पहला मीटिंग था उनका इस साल का. They did not do any kind of changes in the interest rates. So we'll go to the calendar जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं previous times और उसके जरिए हम लोग जानते हैं no major significant data is coming up. If we make it 3-star event, we'll see very few 3-star events are there. This is Chinese data, Canada data. This is one important is coming up next 13th. Next week, almost a week from now, that is will be the next important data, US core inflation and US headline inflation. तो डेटा पॉइंट और इवेंट पॉइंट के बेसिस पे करेंसी में खास कुछ नहीं, स्पेशली विद आईएसएम सर्विसेज पीएमआई ये भी हो गया है. And we have seen US service sector has done remarkably well as per the PMI survey report. So this has broadly been interest rate positive and dollar positive. कल हम लोग डॉलर इंडेक्स में चलते हैं. डॉलर इंडेक्स में कल हम लोग सुबह तो बाइंग देखे ही थे, रैदर फार्दर वो बाइंग फुएल हुआ. And in the evening, we saw a very strong US dollar across the board. जब बाकी सारे asset class were suffering, बाकी सारे asset class में pressure था, whereas dollar was firing up. क्यों ऐसा हो रहा था इसका मैंने highlight किया था. A little bit of late, but क्योंकि always तो focus नहीं रहेगा on the post. ये बेसिकली यील्ड कर्व का कल मूवमेंट था. यील्ड कर्व को नोट कीजिए. 2-year इंटरेस्ट रेट वाज अप 8 बेसिस पॉइंट्स. सो ओवरऑल अगर ट्रेजरी रेट्स आर गोइंग अप, दैट इज पॉजिटिव फॉर द डॉलर. बट उससे भी इंपॉर्टेंट, दैट इज गोइंग ऑन द यूएस 10-year ट्रेजरी वाज अप 12 basis points. Means long-term treasury yield is going faster up than the short-term treasury yield. This is called a bear steepening of the yield curve. When in a phase, when this phase kind of growth globally is slowing down, and this US rate is the global cost of financing. If we see a bear steepening, then it's broadly negative for majority of the asset class, which we saw yesterday. And only one that remains bid is the dollar, and that was the last night's game. Today it's different. अगर हम लोग बॉन्ड मार्केट में जाए, if we go to the bond market, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आज 10-year इंटरेस्ट रेट इज डाउन 0 point, almost same, no major change. Marginal what we can so call is bull steepening. Bull steepening दिख रहा है यहाँ पे कि short term interest rates going faster lower. So basically yield curve is becoming more towards the positive territory. We are heading towards where yield curve becomes a normal. Currently it's negative. Short term interest rate is higher. Obviously it has its own implications. तो ये bull steepening जो है, that is negative for the cyclical stocks, whereas growth stocks like IT, they can do well, whereas cyclical stocks which usually grow with the economy like luxury goods and etc., so they may not do very well. For example, FMCG stocks, they're not likely. If this is a very flat one, अगर
This continues, like short-term interest rate drops faster. That is a mix to negative for overall stocks, but it's not as bad as bear steepening. And bull steepening is this is negative for dollar. So dollar will continue to suffer in the morning. Very likely we are going to see some correction. Dollar index has broken higher. डॉलर का जो स्ट्रेंथ है दैट इज इन द राइजिंग मोड, यूरो का इन द राइजिंग मोड, जीबीपी इज इन अ फॉलिंग मोड, पाउंड राइजिंग, आईएनआर राइजिंग, वेरस गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर कल रात ही हम लोग देखे थे, इट वाज अ ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी. तो सिल्वर एंड गोल्ड बोथ वीक. सो डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, मैं इसमें बाई ट्रेड रखना ही पसंद करूंगा. 11 ऑफ द फैक्टर्स आर बुलिश, 79% प्रोबेबिलिटी. बट करेंसी जो है दैट इज अ वेरी रेंजिश इंस्ट्रूमेंट, तो ये सब जगह पे हॉल्ट होगा. इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड कि ये सारे जो लेवल्स है देयर विल बी सम करेंसीज ऐसे ही मूव करते हैं, थोड़ा रेंजिश, थोड़ा ट्रेंडिंग. तो जो लोग करेंसी के मूव के साथ फैमिलियर नहीं है, काइंडली फैमिलियर फर्स्ट योरसेल्फ बिफोर यू डू एनी काइंड ऑफ बिग क्वांटिटी. So it's broadly going on the positive side. It has breaking the long-term trend. RSI is showing a carve down. So we should not, जिनको long कर छूट गया है, we should not jump, because you can see a bit of momentum divergence in 125 minutes. Things have slowed down. तो यहाँ पे अलर्ट डाल दीजिए short trend bullish. मतलब बैकग्राउंड ग्रीन. तब जाके रूपा में एक अलर्ट आ रहा है, 291.6 क्रॉस कर रहा है. नाउ दिस अलर्ट्स आर वैलिड ओनली इट्स closing, but this is a break alert. This is not a rainbow alert. This is a price break alert. Yeah, it is breaking higher. Rupa is breaking higher. Rupa can have an opportunity here. Let me check. Yeah, Rupa can be a good opportunity. This is breaking higher. It's very early phase of a stock. If it rise, it can go for 417 to 434 to 450 area. But Rupa does look quite good. But in all my trading are like this, alerts based. When I see alerts and there are some confirmation, I'll give some time to the market to adjust. Then only after that I'll trade. So it's based on half automation, means it's a manual plus automation, like humanoid sort of thing. So this is a Euro USD. I squared off a large section of position and it signaled and we were heading towards the meeting. That's a problem a bit. आप अगर broken time frame like India के zone में हो, where the online this CFD trading is not allowed and you are dependent on future contracts from NSE, so you'll have, it's possible, difficult to fine tune करना. But this is bearish and very likely जो हम लोग बात किए थे ये level के आसपास यूरो is heading. interim support 1.0734 जिसके आसपास है, और एक सपोर्ट 1.069, मतलब 1.07. तो कई सारे सपोर्ट मींस इट विल बी अ ग्रेजुअल डिक्लाइन. मार्केट रिमेन्स बियरिश रेंज, सो प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा सेल रेजिस्टेंस. जीबीपी हैज डन ऑसम. कल ही मैं बोला था आई विल बी लुकिंग फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज, वो काम आ गया. इट डायरेक्टली वेंट. टुडे हम लोग को एक करेक्शन दिख रहा है, इट्स विजिबल. But overall, the rainbow candle is making a new low, so we are quite good. A sell resistance remains the main outlook for this pair. ये सब area are likely to be the target of 1.2425, 1.246. This is 1.2512, which is almost reach हो चुका है. And finally, अगर breakdown होता है, this is the trench bottom, the tough support. 1.229, I think 239 or 1.242. This is will be actually a very strong area of comeback. 1.242 and 239 area. बट जीबीपी आईएनआर में और यूरो आईएनआर दोनों में ही मैं शॉर्ट पोजीशन रखना ही प्रेफर करूंगा. यहां से भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसको याद नहीं रहता. सो दिस इज यूरो आईएनआर, दिस इज जीबीपी आईएनआर.
So this is GBP INR is also moving lower. Solid move हुआ है. Today we are seeing a correction. Very likely these were the levels that was reached 104.17. Further इस area पे या this is the actual area जहां पे strong support मिलने वाला है 103.1 to 103.3. इसके बीच में 103.5, 103.62, 104.15 जिसके आसपास ये ऑलरेडी है. सो जीबीपी आईएनआर जो शॉर्ट ट्रेड लिया गया है दैट इज गोइंग वेरी वेल. इसके साथ साथ यूएसडी जेपीवाई बट दैट हैज नॉट डन वेरी वेल. यूएसडी जेपीवाई उतना बढ़िया नहीं परफॉर्म किया है. यहाँ पे ये जो जोन है वहां पे अभी भी स्ट्रगल कर रहा है. कैंडल हैज बिकम मच स्मॉलर. दिखा रहा है कि बुल का स्ट्रेंथ थोड़ा जा चुका है एज इट कुड नॉट पुश हायर. So this is now the new stop loss 148. Actually interest rate very important for USD JPY pair. और जब फेडरल रिजर्व ने अनाउंस कर ही दिया है कि it will cut interest rate by 50 basis point this year, so the USD JPY is finding it difficult to push higher. So जो position hold कर रहा हूँ short वो मैं hold करूंगा. And as per rainbow candle का जो stop loss, max stop loss, which is 56.16 could be hit, but such stop loss for now I'm going to maintain. Let's see how this trade goes. Then you have XAU USD जो गोल्ड कल रेडी नहीं था और आज भी रेडी नहीं है. इंटरनेशनल गोल्ड फॉर सेल ऑफ. We don't have a full red candle, which is the minimum requirement. So the alerts are placed already for full red candle, which is price action bearish. This is price action bearish. और इसके साथ साथ हम लोग इंडिया गोल्ड भी देख लेंगे. गोल्ड मिनी का चार्ट. गोल्ड मिनी इज नॉट रेडी टू डू एनीथिंग. बेटर टू अवॉइड. नेक्स्ट इज सिल्वर. सिल्वर में ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी कल था ब्रेकडाउन. सिल्वर वाज बेटर फॉर सेलिंग क्योंकि ये जो सेल था ये फेवर में था. बट सिल्वर इफ यू लुक एट फाइनली जो मूवमेंट था इट कुड नॉट ब्रेक द डिजायर्ड लेवल. बट यहाँ पे जो MCX का silver has broken the key level because Indian rupee has been much stronger. I think ये break अभी भी valid है. The stop loss is much higher, 71,160 max stop. So I think gradual movement drop further towards this area, 68,720 is likely to continue in silver. But मैं stop loss जरूर maintain करके outlook रखूंगा. I'll prefer to have my outlook with the stop loss maintained. इसके साथ हम लोग जो और दो पेयर रेगुलर देखते हैं दैट इज द यूरो येन. यूरो येन में कोई अपॉर्चुनिटी था नहीं, सो वी हैड टू वेट. Here we are getting a full red candle which is a point of entry, but the background color green is a warning, especially with itna strong support aa raha है 158.7. So I will wait further. I'll wait further to have more confirmation on which side I should play as per this timing tool. This pound yen is more lucrative because pound itself is weak. Japanese yen उतना weak नहीं रहा है. So pound yen में एक position लिया जा सकता है. It is not very bullish at the moment. GBP has been suffering, can drop further, but yen is weak too. But pound yen देखा जाए तो दोनों में से बेहतर लग रहा है. इस background is at least yellow, but इसमें मैं छोटा position रखना पसंद करूंगा. Pound yen में if the drop is good, we can see a decline towards 183.52 जो almost 300 pips है, जो almost 2,400 रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है जीरोधा या इंडियन में, but this can be created synthetically by shorting GBP INR and going long in JPY INR. तो इस पेयर में कोई डॉलर का एक्सपोजर नहीं रहेगा.
So all the best. I think we have covered broadly all the pair. ये जो पेयर मैं ट्रेड नहीं करता हूं दो, उसको भी एक बार बाय करने से पहले देख लेते हैं. Let's look at one is USD INR, very rangish pair. I don't like that, but RBI rate decision is coming up. Maybe we can see some movement on that. USD INR के अलावा we have the Euro GBP, another pair I do not like, but it has recently strong down move. What after that we are seeing a correction. So Euro is now stronger than GBP. So Euro GBP you may get a buying opportunity. So looks like GBP will fall, decline more than Euro in this case. So chaliye, all the best from my side. So happy trading. Finally, to summarize, jo Euro USD, GBP USD, Euro INR, GBP INR, I'll maintain short. USD JPY and JPY, JPY INR maintain short. USD JPY long. No trade is coming in XAU USD. XAU USD कल रात ही हम लोग ट्रेड का बात किए थे in India silver. इसके अलावा जो ट्रेड आ सकता है दैट इज द जीबीपी जेपीवाई कैन बी डन विथ स्मॉल क्वांटिटी. हर केस हर बार हम लोग स्टॉप लॉस एंड रेनबो रूल मैं जरूर फॉलो करूंगा. Even though my fundamental outlook is different, this is the timing tool. I will respect my timing tool. So all the best and happy trading to you. I hope this video is helping you. If it is, don't forget to like and subscribe.